Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start uh, from our new chapter number 4, Mayor of Dispersion, Movements and Skewness. So let's get started from a very basic concept. It is quite possible that two or more sets of data may have the same average, but their individual observations may differ considerably from the average. Let's suppose आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी क्लास में. एक टीचर है एंड शी टीच two sections of statistics. अब दोनों क्लासेस का मिड टर्म एग्जाम हुआ है फॉर एग्जाम्पल, and both classes got an average of 20 marks out of 25. अब क्वेश्चन ये है, can a teacher concluded on the basis of these results the understanding level of both the classes are also same? The answer is no, बिकॉज जो इंडिविजुअल वेरिएशंस आ रही हैं हर स्टूडेंट के मार्क्स में, एवरेज उसको डिस्क्राइब नहीं कर रही है. So the teacher or an instructor need to do some more idea or some more calculation about the spread of the observation कि हर इंडिविजुअल वैल्यू जो कि हमारे डाटा में है वो एवरेज वैल्यू से कितना स्प्रेड आउट कर रही है, कितने डिस्टेंस पॉइंट पे है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है. So we have different measure of dispersion to determine the variability in a set of data, like we have different measure of central tendency. Slide number 2, types of measure of dispersion. Basically we have two types of measure of dispersion, absolute and relative. Absolute measure of dispersion is one that measures the dispersion in terms of the same units as the units of the data. For example, अगर आपके डाटा के यूनिट्स जो हैं वो मीटर्स में है, किलोग्राम्स में है, रुपीस में है, तो जो यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन होंगे वो भी मीटर, किलोग्राम और रुपीस में ही होंगे. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें, वी ऑल आर नो दैट रिलेटिव का वर्ड जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है. ठीक है. बेसिकली जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैं उसको हम रेशो के फॉर्म में, कोफिशिएंट यानी कि नंबर की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में आप जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. इसमें हम यूनिट्स को कंसिडर नहीं करते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ऐसे डाटा सेट्स हैं जिसका आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, एक डाटा सेट के यूनिट्स रुपीज में है और दूसरे के जो है किलोग्राम्स में, और आप दोनों का आपस में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो उसके कंपैरिजन के लिए आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंप्यूट कर लें, तो फिर आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज a relative measure of dispersion is independent of the unit of measurements. The main measure of dispersions are the following: the range, the semi-interquartile range or the quartile deviation, the mean deviation or the average deviation. Mean deviation को हम mean absolute deviation भी call करते हैं, and the most important one is the variance and the standard deviation. One by one हम इसको discuss करेंगे. देन आपको इनके दरमियान डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा. And a measure of central tendency together with a measure of dispersion gives a good description of a set of data. Okay, class. The first measure of dispersion is the range. I already discussed the concept of range in a class. The range R, range को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं,
and it is defined as the difference between the largest and the smallest observation in a set of data. ठीक है, आपके पास एक सेट ऑफ डाटा, आपने अपने डाटा को स्कैन करना है और जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सिंबॉलिकली हम रेंज को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को आप एक्स एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि सबस्क्रिप्ट में एम, और स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक्स नॉट से, यानी कि सबस्क्रिप्ट में नॉट। जो रेंज है इट्स एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, रेंज की जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या कोफिशिएंट ऑफ रेंज कॉल करते हैं। ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का जो फार्मूला है वो भी आप देख सकते हैं, एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ठीक है, और सेकेंडली रेंज फॉर ग्रुप डाटा, अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो रेंज को हम एस्टिमेट करेंगे बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। ठीक है, बेटा हाईएस्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास है और लोवेस्ट क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो अगर आप रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर द केस ऑफ ग्रुप डाटा तो आपने हाईएस्ट क्लास यानी कि लास्ट क्लास की अपर बाउंड्री में से लोवेस्ट क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री को माइनस कर। इज दैट क्लियर? Now we will discuss a simple example to understand the concept of range. The marks obtained by 9 students are given below. 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 40 and 36. And the question is find the range and the coefficient of dispersion. मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इस डाटा को स्कैन करना है और ये जो डाटा है वो मेरे पास अनग्रुप है। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 40 है, जिसको मैंने एक्सएम से डिनोट कर दिया, और जो लोएस्ट मार्क्स यानी कि लोएस्ट वैल्यू है उसको मैंने एक्स नॉट से डिनोट किया, विच इज इक्वल टू 32। इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना। ठीक है, और इसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया, विच इज इक्वल टू 16 मार्क्स। आपके पास रेंज आ गई है 16। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको इंटरप्रेट कैसे करें। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल वैल्यू जो कि आपके डाटा सेट में है वो मीन वैल्यू से ऑन द एवरेज कितने डिस्टेंस पॉइंट पर है, कितनी उसमें वेरिएबिलिटी है या स्कैटर है। ये 16 मार्क्स ये शो कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल मार्क जो कि आपके डाटा सेट में है स्टूडेंट्स का, वो मीन मार्क, I also calculated mean mark or the average mark which is equal to 40, वो मीन मार्क से on the average about 16 distance point far away है। जैसे जो पहली वैल्यू आपके डाटा सेट में वो है 45, आप 45 का डिफरेंस लें 40 से विच इज इक्वल टू 5, 32 का डिफरेंस लें 40 से विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये ऑन द एवरेज आप ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हर इंडिविजुअल वैल्यू का जो कि आपके डाटा में है वो मीन वैल्यू से ऑन द एवरेज अबाउट 16 डिस्टेंस पॉइंट है। अब आपको मे बी ये लग रहा हो कि ये 16 डिस्टेंस पॉइंट का डिफरेंस तो नहीं है। सो द रीजन इज दैट रेंज जो है इसका एक सीरियस डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इट इग्नोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द intermediate observations, and second, as its value based on two extreme values, usually small or large, तो ऑफ कोर्स ये एक मिसलीडिंग पिक्चर क्रिएट करेगी अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डाटा। सो वी कैन से दैट रेंज is an unsatisfactory measure of dispersion, but still daily temperatures and stock prices
में इसको यूज किया जाता है. सेकेंडली, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी मैंने कैलकुलेट किया है. इसका फार्मूला पिछली स्लाइड में गिवन है. 48 minus 32 divided by 48 plus 32 which is equal to 0.2. एंड ऑफ कोर्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या आप इसको कोफिशिएंट ऑफ रेंज कह सकते हैं. इसके साथ यूनिट्स जो है वो आपने मेंशन नहीं करने, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजर. इज दैट क्लियर? Okay, class, slide number 6. I think we should discuss the concept of coefficient of range. एक example discuss कर लेते हैं. Let us take two sets of observations. Set A contains marks of 5 students in statistics out of 25 marks, which includes 10, 15, 18, 20, and 20. And a set B contains marks of the same students in English out of 100 marks. That is 30, 35, 40, 45, and 50. And I calculated the range and coefficient of range for both sets of data. The range for set A is 10 and the coefficient of range is 0.33. And for set B, the range is 20 and the coefficient of range is 0.25. हम इन रिजल्ट से कुछ इंटरप्रिटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि सेट ए में रेंज जो है वो 10 है एंड सेट बी की जो रेंज है वो 20 है. अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि देयर इज ग्रेटर वेरिएशन इन अ सेट बी, बट दिस इज नॉट ट्रू. Because the range of 20 in set B is for larger observations and a range of 10 in set A is for smallest observations. So we cannot compare 10 and 20 directly because their bases are not same. Marks in statistics are out of 25 and marks in English are out of 100. Thus, it makes no sense to compare 10 and 20 directly. That's why we convert these two values in coefficient of range for the purpose of making comparison. Um, we see that the coefficient of range for set A is greater than set B. So we can say that there is greater variation in set A as compared to set B. सेट ए की जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो 0.33 है और सेट बी की जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो 0.25 है. सो जो वेरिएशन है वो सेट ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेट बी. We can say that the marks in English are more stable as compared to the marks in statistics. Stable का मतलब ये है कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स से उनकी जो वेरिएशन है ऑन द एवरेज वो इतनी ज्यादा नहीं है. उसमें कम स्प्रेडनेस है एज कंपेयर टू द मार्क्स ऑफ सेट ए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?